Namaste friends, welcome to the channel. Today we are here to discuss some important amendments introduced through Finance Act 2024 in CGST Act. For this we have CA Anup Kumar Loharuka, a leading GST practitioner, with us to address these issues and to enlighten us on the amendments. Welcome Anup to the show. Anup, GST has been introduced in the year 2017. 17-18, 18-19, 19-20, the first three financial years under GST, the Act was at a very nascent stage. And in the recent past, we have seen a lot of litigations has come up, mostly because of disallowance of input tax credit on account of non-payment of GST by the supplier of goods and services. Government has been trying to address this issue by way of introduction of Circular 183 and thereafter by way of recommendations in the 53rd GST Council meeting. Some of these has been adopted in the Finance Act 2024 by way of introduction of subsection 5 and subsection 6 to section 16 of the CGST Act. I would request you to please enlighten us on these amendments introduced through Finance Act 2024. Chapter 5 deals with input tax credit. Section 16 deals with eligibility and condition for taking input tax credit. सेक्शन 16 सबसेक्शन 4 में इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने की टाइम लिमिट प्रिस्क्राइब की हुई है. प्रेजेंटली क्या टाइम लिमिट है? से फॉर एग्जांपल फाइनेंशियल ईयर 23-24 के लिए अभी टाइम लिमिट 30 नवंबर 2024 है. तो कोई भी रजिस्टर्ड टैक्स पर्सन फाइनेंशियल ईयर 23-24 की क्रेडिट 30 नवंबर 2024 तक ले सकता है. So when the GST was introduced on the first day of the July 2017, this limit for the financial year 17-18 was the next year September month due date, that is 20th October. That was further extended to 31st March 2019. 18-19 की भी टाइम लिमिट सितंबर महीने की ड्यू डेट 20 अक्टूबर थी. 19-20 की भी टाइम लिमिट सितंबर महीने की ड्यू डेट 20 अक्टूबर थी और 20-21 की भी ड्यू डेट सितंबर महीने की ड्यू डेट 20 अक्टूबर थी. तो प्रॉब्लम क्या हो रही थी? गवर्नमेंट ने 21-22 से इसकी टाइम लिमिट 30 नवंबर नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर कर दी. तो गवर्नमेंट का इंटेंशन वाज वेरी मच क्लियर कि 30 नवंबर इज द टाइम लिमिट टू टेक द इनपुट टैक्स क्रेडिट. तो शुरू के इनिशियल 4 इयर्स में क्या हो रहा था? बहुत सारे रजिस्टर्ड टैक्स पर्सन हैं जिन्होंने रिटर्न ड्यू डेट के इनपुट टैक्स क्रेडिट ड्यू डेट के अंदर नहीं ली. उन्होंने 5 दिन का डिले कर दिया, 7 डेज का डिले कर दिया या 10 दिन का डिले कर दिया. तो उनकी इनपुट डिसअलाउड हो गई and the cases was pending in different forums. So this was a very litigated matters. So across the industry, trade and industries, there was a representation. तो इसको भी 30 नवंबर डेट को कर दिया जाए. तो गवर्नमेंट in this 53rd GST Council meeting, they have recommended section 16 subsection 5 of CGST Act, and accordingly this was also approved in the finance bill. Section 16(5) they have introduced new provisions. Section 16 subsection 5 पहले section 16 में 16 subsection 4 तक था. अब उन्होंने section 16 subsection 5 लाया जिसके तहत उन्होंने बोला कि शुरू के इनिशियल 4 इयर्स 17-18, 18-19, 19-20 और 20-21 की क्रेडिट अगर कोई रजिस्टर्ड टैक्स पर्सन GSTR 3B 30 नवंबर तक फाइल 30 नवंबर 2021 तक फाइल कर दिया है तो वो उसको इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल जाएगी. तो अनूप, इसके अंदर जस्ट टू इंटरप्ट, 30th November 2021 is the due date or is the date within which for all the 4 financial years will be taken? Yeah, very right question. All the say for example for the financial year 17-18 किसी रजिस्टर्ड टैक्स पर्सन ने 30th नवंबर 2021 तक रिटर्न लगा दी तो जो फाइनेंशियल ईयर 17-18 में भी उसको बेनिफिट चूंकि उन्होंने 30th नवंबर 2021 तक लगा दी तो उसको उसकी क्रेडिट मिल जाएगी. सो दैट इज वेरी वेरी वेलकम स्टेज बाय द गवर्नमेंट. And I want to say one thing more. It will resolve so many pending litigation, pending different forums, and it will give great relief to the taxpayers. So the government now 16(5), but this was approved in the finance bill, but still the notification is yet to come. So, this notification should come at the earliest possible, so that trade और industry को इसका बहुत इंतजार है जिससे कि इस प्रावधान का लाभ उठा सके. Correct. Anup, thank you very much. Now section 16 subsection 6, a new subsection has been introduced wherein input tax credit for the registered taxpayers whose registration has been cancelled and has been revoked, the cancellation has been revoked for later on.
So during that period, the effective date of cancellation as well as the effective date of revocation of cancellation, for that transition period, the input tax credit, how the person can avail. So I think section 16.6 addresses that, and if you can enlighten us on this. Very good questions raised by you, sir. सेक्शन 6 हो के मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड देना चाहता हूँ. अगर कोई रजिस्टर्ड टैक्स पर्सन का रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया और जब वो रजिस्ट्रेशन रिस्टोर होता है, एक्टिव होता है बाय द प्रॉपर ऑफिसर्स, जो टाइम लिमिट प्रिस्क्राइब की हुई है सेक्शन 16 सबसेक्शन 4 ऑफ सीजीएसटी एक्ट में, दैट इज 30th नवंबर ऑफ द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर. तो अगर उसका रजिस्ट्रेशन एक्टिव 30th नवंबर के डेट के बाद होता है, तो एज पर सेक्शन 16 सबसेक्शन 4 उस आरटीपी को उसका इनपुट टास्क क्रेडिट नहीं मिलेगा. दिस वाज द ग्रेट पेंडिंग लिटिगेशन मैटर्स. सो इन 53rd जीएसटी काउंसिल द गवर्नमेंट ने रिकमेंडेशन दिया, उन्होंने नया प्रोविजन इंसर्ट किया सेक्शन 16 सबसेक्शन 6 ऑफ सीजीएसटी एक्ट, एंड इसको फिर फाइनेंस बिल में अप्रूवल भी दे दिया गया, जिसके तहत ये बताया कि अगर किसी व्यक्ति का रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया है और उसके बाद उस व्यक्ति का रजिस्ट्रेशन रिवोक हो जाता है, एक्टिव हो जाता है, तो वो रजिस्टर्ड टैक्स पर्सन अगर 30 डेज के अंदर पेंडिंग रिटर्न्स फ्रॉम द डेट ऑफ कैंसिलेशन टू द इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन रिटर्न लगा देता है, इवन द टाइम लिमिट प्रिस्क्राइब अंडर सेक्शन 16 सबसेक्शन 4 एज एक्सपायर्ड, विद इन 30 डेज अगर उसकी रिटर्न लगा देता है तो उसकी इनपुट टैक्स क्रेडिट उनको मिल जाएगी. 30 days is from the date of restoration of the registration. Yes. Okay. That is very important points, and it is very well. I will say it is a very welcome steps, so that registered person को अब उसका benefit मिल जाएगा और ये बहुत सारे pending litigation को भी resolve करेगा और clarity and transparency भी लाएगा. Thank you, Anup. Anup, one very important section has been introduced, section 128A in the CGST Act, which relates to the amnesty scheme. And considering the litigations which are there, lot of interest and penalties are being levied. So I would like to request you to enlighten us on this amnesty scheme, and what are the requirements or what are the conditions for the amnesty scheme. तो अभी गवर्नमेंट ने सेक्शन 53rd जीएसटी काउंसिल में सेक्शन 128A ऑफ सीजीएसटी एक्ट इंट्रोड्यूस किया है, जिसका भी अप्रूवल अभी मिल गया है फाइनेंस बिल के तहत. सेक्शन 128 ये बोलता है कि अगर आपका 73 के अंदर एससीएन इशू हुआ है या 73(9) के अंदर ऑर्डर पास हो गया है या आपका एपेलेट अथॉरिटी का ऑर्डर पास हो गया है और उस ऑर्डर में आपका टैक्स पेबल इंटरेस्ट एंड पेनल्टी है. टैक्स पेबल इज इंपॉर्टेंट, वो टैक्स पेबल भी रहना चाहिए, टैक्स पेबल इंटरेस्ट और पेनल्टी है. तो वो रजिस्टर्ड टैक्स पर्सन स्पेसिफाइड टाइम लिमिट, इट मे बी 31 मार्च 2025, उसके अंदर टैक्स का अगर भुगतान कर देता है तो उस रजिस्टर्ड टैक्स पर्सन को इंटरेस्ट और पेनल्टी का वेवर मिल जाएगा. कहने का मतलब है सेक्शन 128 इज कंडीशनल वेवर ऑफ द इंटरेस्ट एंड पेनल्टी इफ द टैक्स पेमेंट इज मेड विद इन द शेड्यूल्ड टाइम. So what I correctly understood, it is like order passed under section 73 and it must be pending before the appellate authority. Or order passed by the appellate authority also. Or order passed by the appellate authority. So if these conditions are satisfied and the payable is the tax payable along with interest and penalty. Yes. In that case, if the registered taxpayer pays the entire tax amount, then 100% of the interest and penalty is waived. Correct, right? correct. Okay. That's a very welcome step by the government. Yes. And I think it will really going to help all the MSME taxpayers, registered taxpayers who have been litigating these matters, and the cost of litigation is very high. Yes. So it is a big burden on the MSME sector. Right. And thank you very much, Anup. And one thing I want to also add on, 128A is not applicable for section 74 cases. Okay. It is only applicable for section 73 cases. Point number 2, 128 is not applicable for the erroneous refund. So that is also very important point. And another thing, just I want to highlight for the section 16 subsection 6, the government has recently introduced, there is one issue. They have introduced 16 subsection 6 by which a registered tax person can take the credit within 30 days from the date of the revocation of registration. But now the question arose, what will happen with the recipient? Suppose he has filed GSTR1 as well within 30 days. Correct, that's a very important point. That is very important point. So we are trying, this point should also be clarified by the government.
what will happen with the recipients? The clarification is required on this point also. Correct. Just before we close, can you just touch upon Section 74? Like as you mentioned, order passed under Section 74 is not within the purview of amnesty scheme. Now, what are the orders under Section 74? Section 74 deal with tax paid or payable for the fraudulent activities. Fraudulent activities. Okay. Anup, one more important amendment has been done by way of introducing Part C to form DRC 1A. I would request you to please enlighten us on this. Yes, very important issue. DRC 01A, earlier there is an option of the Part A or Part B. There is no option if the suppose RTP has given all the clarifications, there is no option to issue the drop order by the proper officers. So recently the government has issued, they have added in DRC 01A Part C, by which the proper officer can drop the matter in the DRC 01A stage only if it is satisfied with all the explanations. There is no need to issue the SCN on this matter now. Okay. That's again a very important step taken by the government to reduce litigations and to reduce the number of cases lying before the appellate authority or the other various forums of Right. legislation. So, thank you very much for enlightening us on these important amendments introduced in Finance Act 2024, and we look forward for the notification to be issued ASAP so that the taxpayers get the benefit of it. And I hope all the viewers will get enriched with this. For any queries, please feel free to call upon us, to write to us, and we will try to address as soon as possible on the queries. Jai Hind. Jai Hind. Thank you. Thank you.